I am Ansari Tahera Tasneem Haji Muhammad from J.A.T Arts, Science and Commerce College, Malegaon. Today, my topic is the evolution of Reserve Bank of India. Most welcome to my lecture, The Evolution of Reserve Bank of India. Let us introduce the evolution of RBI. The Reserve Bank of India is the central bank of India and established on 1st April 1935. There was a long chain of efforts for the creation of a central bank in India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 से। इसकी एक लंबी कहानी है कि लोगों ने कोशिश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक बनाने के लिए। In this, number 1 is the recommendations of establishment of General Bank in Bengal and Bihar. The very first effort to set up a central bank in India was seen to be made in January 1773. सबसे पहली शुरुआत जो है 1773 से हुई। The governor of Bengal, Warren Hastings, saw the need of having a central bank in the country. सबसे पहले बंगाल का गवर्नर वार्न हेस्टिंग्स ने ये बात महसूस की कि मुल्क में कोई एक मरकजी बैंक जो है वो होना चाहिए। The second is Robert Richards' plan for General Bank. In 1807, the second attempt to set up a central bank in the country was in 1807-8. Robert Richards, a member of the Bombay government, सबसे पहले रॉबर्ट रिचार्ड ने ये बात महसूस की कि मुल्क का कोई एक मरकजी बैंक होना चाहिए। This Robert Richards, a member of the Bombay government, presented a plan for General Bank. सबसे पहले इसने एक प्लान जो है वो पेश किया। Then third is comprehensive plan for India Central Bank by Professor J.A.T. In various efforts to establish a central bank in India, Professor J.M. had an important contribution. प्रोफेसर J.M. का एक अहम और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है आरबीआई को कायम करने के लिए। Who is a member of Royal Commission in India, Finance and Currency Proposal, a comprehensive plan
for an Indian central bank, and he presented in it the form of the proposal for establishment of the State Bank of India. जेम केन्स ने प्रपोजल बनाया और उसे पेश किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने के लिए. देन फोर्थ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया in 1921. An important step for setting up of the central bank in India was taken in 1921. सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो लिया गया सेंट्रल बैंक को कायम करने के लिए, तो उसकी शुरुआत हुई 1921 से. In this year, 3 presidency banks in India were merged to form Imperial Bank. 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो है उनको मर्ज कर दिया गया, जम कर दिया गया और उनसे बना एक इंपेरियल बैंक. Though this imperial bank was mainly a commercial bank, ये इंपेरियल बैंक जो है जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक की तरह काम करता था. इट परफॉर्म सम जॉब्स ऑफ सेंट्रल बैंक अंटिल 1934. ये इंपेरियल बैंक कमर्शियल बैंकों की तरह काम करता था और कुछ इसके पास जॉब्स थे, कुछ काम थे सेंट्रल बैंक के भी. अप टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपेरियल बैंक अपना काम करता रहा. इंपेरियल बैंक एक्टेड एज गवर्नमेंट्स बैंक एंड टू सम एक्सटेंट बैंकर्स बैंक. ये इंपेरियल बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक था और बैंकों का भी बैंक था. इस तरीके से सेंट्रल बैंक के ये फंक्शंस इंपेरियल बैंक जो है वो पहले अंजाम देता था. देन नेक्स्ट इज द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन 1926. It is an important to consider the contribution of the Royal Commission of an Indian Currency and Finance in 1926, also known as Hilton Young Commission, in the establishment of a central bank of India. हिल्टन यंग कमीशन के सजेशन पर सबसे पहले इंडियन करेंसी और फाइनेंस दिस हिल्टन यंग कमीशन ने इस्टेब्लिश किया सेंट्रल बैंक, और उसको कायम करने के लिए इसने सबसे पहले सजेस्ट किया. दिस कमीशन हैड सजेस्टेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया as the name for the country's central bank. इसने सजेस्ट किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुल्क का सेंट्रल बैंक होगा. देन नेक्स्ट रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन 1931. In 1931, Indian Central Banking Inquiry Commission strongly recommended the establishment of Reserve Bank of India. 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन ने फोर्सफुली रिकमेंड किया
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए. A new establishment of the Reserve Bank of India finally in 1935. A new proposal was established or tabled in the Legislative Assembly on 8th September 1933. It was passed on 22nd December 1933 and approved by Governor General on 6th March 1934. Thus, the Reserve Bank of India Law of 1934 was enacted. लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 सितंबर 1933 को पेश किया गया, जो कि पास हुआ 22 दिसंबर 1933 को, और गवर्नर जनरल ने अप्रूव्ड किया इसे 6 मार्च 1934 को. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफ 1934 was enacted. Accordingly, Reserve Bank of India was established, was recommended its operation on 1st July 1935. इसका कानून पास हुआ 1934 में, बना ये 1934 में, और उसने अपने काम की शुरुआत जो है 1935 से किया, 1 अप्रैल 1935. Then the first of all, it is a private owned institution. Initially, this Reserve Bank of India was set up as a shareholders बैंक. शुरुआत में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डर्स के कलेक्शन से बना. दिस मोल्डेड ऑन लीडिंग सेंट्रल बैंक अब्रॉड. बैरूनी ममालिक के सेंट्रल बैंक की तर्ज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना. Its fully paid up capital was ₹5 crores. इसका पेड अप कैपिटल जो है 5 करोड़ था, and was divided in shares of ₹100 each. Then government owned institution from the 1st Jan 1949. The question of private ownership of the bank was raised in views of the bank's monetary and credit policies and integration of government's comprehensive economic policies. ये पहले तो प्राइवेट ओनरशिप था, फिर बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी और गवर्नमेंट के इंटरैक्शन की वजह से एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बनाई गई. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महसूस किया, इसने डिसाइड किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौमिया लिया जाए. दस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप फ्रॉम द प्राइवेट ओनरशिप
Act was passed in 1948 and the bank was acquired by the government after paying adequate compensation to the shareholders. फिर जब कानून पास हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आया इन 1948 और फिर बैंक ने तमाम शेयर होल्डर्स को उनका मुआवजा कॉम्पेंसेशन जो है वो दिया। फ्रॉम 1st January 1949 the Reserve Bank of India started working a public owned institution। तो फिर इस अदारे ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम हुकूमत की निगरानी में पब्लिक ओन इंस्टीट्यूशन के तौर पर एक मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री करने के लिए सेंट्रल बैंक का काम अंजाम देने लगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।